નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ધ ઇન્ડિયન ટાઈમ્સમાં આપનું સ્વાગત છે। છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ગૌમાંસનો 361 કિલોગ્રામ જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો। છોટાઉદેપુર પોલીસ દ્વારા છોટાઉદેપુર વિસ્તારમાંથી ₹72,290 તથા અન્ય મુદ્દામાલ સહિત કુલ 1,77,090ના મુદ્દામાલ સાથે બે વ્યક્તિને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ગૌમાંસનું વેચાણ ચાલુ હોય પશુઓના કતલ રોકવા માટે અસરકારક કામગીરી કરવામાં जिला पुलिस वड़ा इम्तियाज शेख द्वारा सूचन आपवामां आव्युं हतुं। जे अनुसंधाने छोटाउदेपुर पुलिस द्वारा कामगीरी हाथ धरवामां आवी। जे अनुसंधाने पीआई AR प्रजापति तथा स्टाफना माणसो छोटाउदेपुर पोलीस स्टेशन विस्तारमां पेट्रोलिंगमां हता ते वखते छोटाउदेपुर स्टेशन विस्तार में आवेली साबुनी चाली में रहता अब्दुल कादिर इब्राहिम साबू पोताना आर्थिक फायदा माटे गौवंश लावी पोताना રહેણાંક मकान में कायदेसर रीते कतल करी रहेल छे तेवी बातमीना आधारे तपास करता हकीकतवाड़ी जग्याए रेड करी गौमांस झड़पी पाडवामां आव्युं हतुं। जेमां अब्दुल कादिर इब्राहिम भाई साबू अने रमजानी अब्दुल कादिर साबू ने पोलीसे झड़पी पाड्या हता। ज्यारे अन्य एक आरोपी झवेरभाई राठवाने पकड़वाना चक्रो गतिमान कर्या छे। 4/10/2025 ना रोज अमो तेमज साथेना पोलीसना माणसो टाउन विस्तार में पेट्रोलिंग हता ते दरमियान बातमी हकीकत मळेल के स्टेशन विस्तार में साबुनी चाली में अब्दुल कादिर इब्राहिम साबू तेमना રહેણાંક मकान में गैरकायदेसर गौवंशनी कतल करी पोताना आर्थिक फायदा सारू वेचाण करे छे ते हकीकत आधारे सदरी अब्दुल कादिर इब्राहिमना घरे पंचो साथे पोलीसे रेड करता बे आरोपी अब्दुल कादिर तेमज तेनो दीकरो रमजानी स्थल पर मળી આવેલ તેમજ ગૌવંશનો જથ્થો ત્યાંથી કબજે કરવામાં આવેલ અને આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાલ ચાલુમાં છે।